Hey everyone, welcome back to Arijit Talk Sports. This is Arijit. This is part 2 of the video where we are previewing every single driver's upcoming 2020 Formula 1 season. We are looking at drivers number 11 to 20 today, so without any delay, let's begin. Number 11 that our spotlight falls on is Pierre Gasly from AlphaTauri. तो अगर आपको पता होगा लास्ट ईयर यही AlphaTauri टीम जो थी वो टोरो रोसो टीम थी, इस साल उन्होंने अपना नाम बदल के AlphaTauri कर दिया। ओके, और पियर गैसली जो लास्ट ईयर थे, जो उनका लास्ट ईयर था, ही स्टार्टेड दैट विद रेड बुल। वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्हें डिमोशन मिला टोरो रोसो पे, बट जब से वो टोरो रोसो में आए हैं he has put up some beautiful performances, including finishing second in Brazil, which I think was an amazing achievement for him. So I think he will be very high on confidence and he will want to continue that amazing string of results that he has had with Toro Rosso. Now Pierre Gasly बहुत उस टाइप के ड्राइवर है, I mean in the sense कि inconsistent driver, he can surprise you sometimes and he can disappoint you sometimes. So you know we will have to look ahead to that कि वो क्या करते हैं, क्या वो disappoint करते हैं, because expectations are high right now because of those amazing performances that he had for Toro Rosso. I do expect him to continue those performances, but I will, say that with a grain of salt because I have seen Pierre Gasly disappoint a lot of times. So, he can disappoint, but I still expect him to have a good year this year. Driver number 12 that we're looking at is also from AlphaTauri and his name is Danny Kvyat. तो Danny Kvyat में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा potential है और इतना potential है जो अभी तक कभी fully achieve नहीं कर पाया. I mean, he got a chance to go to Red Bull, but वहाँ पे अपना place वो maintain नहीं कर पाया. He's back with AlphaTauri. तो I mean he has had some good performances down the years, but कभी भी लगातार बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए. मुझे लगता है जितना उनका पोटेंशियल है, जितना उनका टैलेंट है, उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाए हैं. तो इस सीजन मुझे लगता है वैसे ही नॉर्मल सीजन रहेगा. वी आर लुकिंग एट एन एवरेज सीजन फॉर हिम. कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे, बट डेफिनेटली ड्राइवर नंबर 2 रहेंगे फॉर AlphaTauri बिहाइंड पियर गैसली. So yeah, let's look forward to an average season from Danny Kvyat, sprinkled with a few surprises here and there. Number 13 is Sergio Perez from Racing Point. So Sergio Perez has been in Formula 1 for a long time. बहुत experienced driver है, proven points getter है और Racing Point और उसके पहले Force India के साथ बहुत साल से रह चुके हैं. तो I think कि मतलब कि बहुत comfortable है उस टीम में, बहुत comfortable है Formula 1 में. तो I would say कि that he will have another strong season just as he always has. He's a very competitive driver. He's a very experienced driver. So look forward to him getting a few good points for Racing Point again this year and might even be a competition for the top 5 in few of the races. Driver number 14 is Lance Stroll from Racing Point. So Lance Stroll first of all gets a lot of flack for his dad owning the Racing Point team, and people say he's in Formula 1 because of that. Now that is not totally true. First of all, I believe कि definitely father की वजह से help मिल जाता होगा, but he has the talent. I mean, you have to have the talent to be in Formula 1 and the talent is definitely there in Lance Stroll. However, I agree he's not very experienced. He hasn't put up really good performances पिछले कुछ सीजन में. तो मुझे लगता है कि if he is driven enough and he's driven enough to prove those critics wrong जो उनको बोलते हैं कि he's not talented enough to be in Formula 1, then I think he can put in some good performances with this Mercedes-powered Racing Point team. तो मुझे लगता है अगर if he's driven, he can put in some good performances, but definitely अगर वो पिछले जो लास्ट सीजन जैसे उन्होंने परफॉर्म किया वैसे परफॉर्म किया, then those criticisms will just increase. Driver number 15 is Kimi Raikkonen from Alfa Romeo. So Kimi Raikkonen is over 40 and is still racing and he has a ton of experience. He's the 2007 world champion. इसके पहले वो Ferrari में थे. Last season से वो Alfa Romeo में आ गए हैं and I think he's very much enjoying his time at Alfa Romeo. I mean, he's away from the spotlight and he's getting important points for Alfa Romeo. That's all that matters. So expect to see Kimi Raikkonen having another year of fun racing and getting some important points for Alfa Romeo. Driver number 16 is Antonio Giovinazzi, also from Alfa Romeo. So Antonio Giovinazzi was completely outcompeted by his teammate Kimi Raikkonen last season. So we will all hope for Antonio Giovinazzi that he gets more competitive there. He can finally challenge Kimi Raikkonen, because if he can challenge Kimi Raikkonen for that number 1 spot at Alfa Romeo, then I think it will be a big achievement for him. And if he gets back some points from Alfa Romeo, that will also be great on his resume. So I hope that he gets more competitive this year. Last season उनका उतना अच्छा नहीं था. There were some disappointments there. Or I do expect him to make some mistakes this year, continue to make those mistakes. But I just hope that he learns and if he can try and compete with Kimi Raikkonen, that will be the best for him going forward. Driver number 17 is Romain Grosjean from Haas. तो अगर इनके बारे में बात करें तो on his day he can put up some good performances, but बहुत ज़्यादा unpredictable है, disappointing भी रहता है बहुत बार. तो that's his drawback. और मुझे लगता है Haas टीम जो है पिछले साल बहुत mistakes make किए.
So I don't see him doing very well this season. With Haas, they will be definitely competing at the bottom half of the table. But मुझे लगता है Romain Grosjean definitely has the ability and the talent to have an amazing day at the office. और अगर कुछ अच्छे points लेके आए Haas के लिए, जो कि वो definitely capable है करने के लिए, तो I will be impressed with him. Driver number 18 is Kevin Magnussen, also from Haas. तो इनके साथ भी वही बात है जो मैंने रोमन ग्रोजॉन के साथ बोला कि बिकॉज हास बहुत अच्छी टीम नहीं है, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू इम्प्रूव ड्रामेटिकली दिस ईयर, तो डेफिनेटली बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में कंपीट करते रहेंगे. केविन मैग्नुसन का भी लास्ट ईयर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, बट आई स्टिल थिंक दैट इज अ फियर्स कंपेटिटर. ही विल बी फाइटिंग वेरी हार्ड टू गेट हास सम पॉइंट्स, सो एक्सपेक्ट सम गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिम फॉर हास, बट नथिंग टू गुड. ऑब्वियसली बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में कंपीट करते रहेंगे, बट वी होप दैट ही कैन शो मोर ऑफ हिज कंपेटिटिव ड्राइव दिस ईयर एंड गिव अस सम परफॉर्मेंसेस टू बी प्राउड ऑफ. नंबर 19 इज जॉर्ज रसल फ्रॉम विलियम्स. तो विलियम्स जो टीम है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है फॉर्मूला 1 में, बॉटम हाफ ऑफ द टेबल पे है, ऑलमोस्ट दी बॉटम टीम है. बट जॉर्ज रसल वाज इंप्रेसिव लास्ट ईयर. आई मीन उनका रुकी ईयर था, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शो किया बियॉन्ड हिज ईयर्स, और मुझे लगता है प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल किया विलियम्स के लिए. तो मुझे लगता है डेफिनेटली सुप्रीमली टैलेंटेड ड्राइवर है, और मुझे लगता है इस सीजन ही विल कंटिन्यू फ्रॉम वेरी लेफ्ट ऑफ. See him showing a great fighting ability despite being in a Williams car, जो कि बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगी. मुझे लगता है he'll definitely be giving the big boys a run for their money. तो it'll be very interesting to see George Russell this year. Number 20 is Latifi, also from Williams. तो मुझे लगता है इनका रूकी सीजन है, फर्स्ट टाइम है एक फॉर्मूला 1 कार में, बट मुझे लगता है इनके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू लर्न फ्रॉम हु इज जॉर्ज रसल. तो अगर जॉर्ज रसल को कॉम्पिटिशन दे पाए, अच्छे से compete कर पाए उनसे इस सीजन, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा. और जॉर्ज रसल से सीख पाए तो गेन हिम सम वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो मुझे पता नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैवंट सीन दिस गाय रेस, तो मुझे पता नहीं वो क्या कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर जॉर्ज रसल से सीखे और उनको कॉम्पिटिशन देने की कोशिश करे तो विल बी अ ग्रेट ईयर अहेड फॉर हिम. बट डेफिनेटली विलियम्स कार में है, तो डोंट एक्सपेक्ट हिम टू डू ट्रेमेंडसली वेल. डेफिनेटली बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में compete करेंगे. So with that we can end the video. ये था मेरा preview of the 20 drivers that will be racing in this upcoming 2020 Formula 1 season. Comment section में comment करके बताना कि आप कितने excited है इस Formula 1 season के finally शुरू होने पे. Who is the driver that you are most excited to see? मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके comments को देख के. अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो please like, comment, share, subscribe and see you guys in the next one as always.